Good morning all. This is a presentation on the topic non-aqueous solvents. So let us start discussing about non-aqueous solvents. An inorganic non-aqueous solvent is a solvent other than water that is not an organic compound. For example, liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, sulfuric chloride, phosphoryl chloride, antimony trichloride, bromine pentafluoride, hydrogen fluoride, and other inorganic salts. These solvents are used in chemical research and industry for reactions. तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल अलग होते हैं और वाटर से भी डिफरेंट होते हैं. इनका यूज़ होता है केमिकल रिसर्च में और इंडस्ट्रीज़ में फॉर रिएक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स. अब सॉल्वेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है? Solvents can be classified on three bases. First, classification of solvent based on proton. Second, classification of solvents based on polar and non-polar solvents. And the third is classification of solvents on aqueous and non-aqueous solvents. Now let us study the different classifications. Types of non-aqueous solvents. First classification is as protonic and non-protonic solvents. These solvents from which protons can be derived are called protonic solvents. यानी जिनसे प्रोटॉन निकाला जा सकता है उन्हें कहते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. द सॉल्वेंट्स फ्रॉम विच प्रोटॉन कैन नॉट बी derived आर कॉल्ड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट. यानी जिनसे प्रोटॉन derived नहीं हो सकता उन्हें कहते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा. Now here we can see that protonic solvent are also known as protic solvent, and then there are few examples like 2NH3 gives out NH4 ammonia plus NH2 negative amide. Next is 3HF gives out H2F plus HF2, that is hydrogen difluoride. And then next is 2H2SO4 gives out H3SO4 positive plus HSO4 negative. Here protic solvents are further classified in two categories. The first one is as acidic or protogenic solvent. For example, H2SO4, HCl, CH3COOH, HCN, etc. And the second way of classification is second type is basic or protophilic solvent. For example, NH3, N2H4, etc. Then non-protonic solvent are also known as aprotic solvent. For example, C6CHCl3, CCl4, SO2. And the reaction example is N2O4 gives out NO positive, that is nitrosodium ion plus NO3 negative nitrate. And another example is of 2SbCl2 gives out SbCl2 positive, that is dichloro antimonium plus SbCl4 negative, that is tetrachloro antimonate. And another example can be PoCl3 gives out PoCl2 positive plus PoCl4 negative. Second way by which non-aqueous solvent can be classified is as acidic solvent, basic solvent, or amphiprotic solvent. Let us discuss them one by one. So the first is the solvent which have a tendency to donate proton are acidic in nature and are called acidic solvent. यानी ऐसे solvent जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और नेचर में एसिडिक होते हैं उन्हें कहते हैं एसिडिक solvent. For example, acetic acid, HF, etc. The second is the solvent which have strong tendency to accept protons are basic in nature and are called basic or protophilic solvent. यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और जिनका नेचर बेसिक होता है उन्हें हम कहते हैं बेसिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल लिक्विड NH3,
C6H5N, that is pyridine, etc. And then the third one is the solvent which neither have tendency to gain or nor to lose protons are called amphiprotic और amphoteric solvent। यानी ऐसे solvent जो ना ही तो प्रोटॉन गेन करे और ना ही प्रोटॉन डोनेट करे, उन्हें हम कहते हैं amphiprotic और amphoteric solvent। फॉर एग्जाम्पल H2O, C2H5OH, etc. The third way of classification of non-aqueous solvent is as ionizing and non-ionizing solvent. Ionizing solvent are the solvent which are capable of undergoing self-ionization or auto-ionization, यानी जो खुद का ionization खुद कर सके। For example, H2O, NH3, SO2, etc. The solvent which do not ionize at all are called non-ionizing solvent, यानी जो बिल्कुल भी आयनाइज ना हो उन्हें हम कहते हैं नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, हाइड्रोकार्बन्स, एक्सेट्रा। दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। Then the fourth way of classification of non-aqueous solvent is as coordinating and non-coordinating and non-coordinating solvent. The solvents which are capable of coordinating with the metal ion or anion of the solute are called coordinating solvent। यानी ऐसे solvent जो coordinate कर सके solute के metal ions या फिर solute के anions के साथ, उन्हें हम कहते हैं coordinating solvent। For example, NH3, SO2, DMSO, DMF, etc. On the other hand, the solvent which are not capable of coordinating with the metal ion of solute are called non-coordinating solvent। यानी ऐसे solvent जो solute के metal ion के साथ coordinate ना करें, उन्हें हम कहते हैं non-coordinating solvent। For example, CCl4, saturated hydrocarbons, etc. Then the next is physical properties of solvent. So non-aqueous solvent or the solvent show the bill of physical properties. First is melting point and boiling point, then dielectric constant, viscosity, dipole moment, heat of fusion and heat of vaporization. Now let us discuss these physical properties in case of liquid ammonia as non-aqueous solvent. Freezing point in case of liquid ammonia is -77.7 degrees Celsius. Boiling point is -33.38 degrees Celsius. Value of dielectric constant is 22.0 at -33.5 degrees Celsius. Liquid range is from -77 to -33 degrees Celsius. Heat of fusion is 0.018 kilojoule per mole. Heat of vaporization is 23.6 kilojoule per mole. Liquid ammonia is self-ionizable in nature, that means auto-ionizable, and liquid ammonia act as an associated solvent. Then here we go with the question, why ammonia act as a better solvent than water? अमोनिया वाटर के कंपैरिजन में बेटर सॉल्वेंट क्यों होता है? सो हेयर आर द फॉलोइंग रीजंस। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमोनिया इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज़ ग्रेटर देन वाटर, जो अमोनिया की स्पेसिफिक हीट है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लेस विस्कस देन वाटर, अमोनिया वाटर के कंपैरिजन में कम विस्कस होता है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है वो अमोनिया के केस में हाइयर है। नेक्स्ट इज लेस एसोसिएटेड देन वाटर ड्यू टू लेसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया कम एसोसिएट होता है। एंड द नेक्स्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस विद एल्कली मेटल्स, क्योंकि अमोनिया फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल, इसी वजह से सॉल्यूशन बना लेता है अल्कली मेटल्स के साथ। दैट इज़ वाई अमोनिया एक्ट एज अ बेटर सॉल्वेंट देन वाटर, इसी वजह से हम अमोनिया को लेते हैं रादर देन वाटर एज इट इज़ बेटर सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? सो द फर्स्ट इज मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
The reaction in which precipitation occurs on mixing two solutions are called methatical or precipitation reactions. ऐसे reactions जिनमें दो solutions को mix किया जाए और फिर reaction occur हो उन्हें हम कहते हैं metathetical और precipitation reaction. For example, 2AgNO3 plus BaCl2 gives out 2AgCl plus BaNO3 twice. The next type of reaction in case of non-aqueous solvent is salt formation. The reactions between appropriate acidic and basic substances to form salts are called salt formation. यानी ऐसी reactions जो acid और base के बीच में होती है to give salt are called salt formation reaction. For example, sodium uride cannot be prepared by the action of urea on sodium hydroxide in water, because strong base cannot take proton from urea molecule. Na positive, NHCO, NH2 negative, that is sodium uride plus H2O gives out Na positive OH negative plus urea, that is NH2CO, NH2. However, this can be easily formed in liquid ammonia by reaction of urea with sodamide. Urea plus sodamide gives out sodium uride plus NH3, that is NH2CO, NH2 urea plus Na positive, NH2 negative. Sodamide gives out Na positive, NHCO, NH2 negative, sodium uride plus NH3. The next type of reaction in case of non-aqueous solvent is acid-base reaction. Acid-base reaction can be explained on the basis of solvent system concept. An acid is a substance that by direct dissociation of reaction with the solvent gives the cation characteristic of the solvent. यानी कि जो एसिड है वो क्या होता है, डेसोसिएशन के बाद या रिएक्शन के बाद सॉल्वेंट में केटायन देता है, whereas a base is a substance that give us the anion characteristic of the solvent. यानी बेस जब डेसोशिएट होता है या रिएक्शन होती है तो वो हमें देता है एनायन. फॉर एग्जाम्पल, इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट NH4 पॉजिटिव आयन एक्ट एज एसिड एंड NH2 नेगेटिव आयन एक्ट एज बेस. यानी कि जो हमारा NH4 है वो हमारा क्या होगा, cation, because it is acid, whereas NH2 ion is base, it will be act as an ion. The neutralization reaction is NH4Cl plus NaNH2, that is acid plus base, gives out NaCl plus 2NH3, that is salt plus solvent. So this was acid-base reaction. The next type of reaction in case of non-aqueous solvent is solvolytic reaction or solvolysis. The reaction in which the solvent molecule react with the solute in such a way that the solvent molecule split up into two parts, one or both of which get attached to the solute molecule or ion, are called solvolytic reaction. यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पर होती है जिसमें सॉल्यूट स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, और जो स्प्लिटेड पार्ट्स हैं वो एक या दोनों पार्ट्स सॉल्यूट के साथ अटैच होकर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस फॉर्म करते हैं. सो उन्हें हम कहते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन या फिर सॉल्वोलिसिस. इफ़ यहाँ पे हम दो टाइप के सॉल्वेंट ले सकते हैं, लाइक वाटर ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं. तो अगर हम वाटर को ले सॉल्वेंट, हमने पहले डिस्कस किया था कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इज़ बेटर सॉल्वेंट. सो हेयर हम देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू भी कि विच इज़ मोर एफिशिएंट, वाटर और लिक्विड अमोनिया. सो इफ वी टेक वाटर एज सॉल्वेंट, then 2H2O gives out H3O positive plus OH negative, which is autoionization, and SO2Cl2 plus 4H2O gives out SO2OH twice plus 2H3O positive plus 2Cl negative. And in case of fluorine, that is F negative plus H2O gives out HF plus OH negative. Whereas if we take ammonia as solvent, then 2NH3 gives out NH4 positive plus NH2 negative. SO2Cl2 plus 4NH3 gives out SO2NH2 twice plus 2NH4 positive plus 2Cl negative, and H negative plus NH3 gives out NH2 negative plus H2.
The fifth type of reaction in case of non-aqueous solvent is solvation reaction. Solvent get attached to a solute species, cation, anion और molecule are called solvation reaction. यानी ऐसे reaction जिसमें solvent solute के साथ attach हो जाता है और वो solute species क्या क्या हो सकती है. It can be cation, it can be anion और it can be a molecule. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सॉल्वेशन. और जो हमारी स्पीसीज फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. द स्पीसीज फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्वेंट. CuSO4 plus 4NH3 gives out CuSO4 dot 4NH3. So here CuSO4 dot 4NH3 is a solvent and name of the solvent is ammoniate. Similarly, CuCl2 plus 4H2 gives out CuH2O whole 4 2 positive plus 2Cl negative, which is hydrate. And in case of BaSO4 plus 3H2SO4 gives out BaSO4 dot 3H2SO4, which is again an solvate, and the name of this solvate is solvate of sulfuric acid. So this were all about non-aqueous solvent, in which we have discussed what are non-aqueous solvent, what are their classification. Then we have discussed physical properties by help of liquid ammonia. Then we have seen comparison of water and liquid ammonia as a better solvent. And then we have studied type of reactions in non-aqueous solvent. So this was all about non-aqueous solvent. Thank you.